Good afternoon, students. Namaste, Om Gupta ji. Namaste, Anmol Patwa ji. So I'm seeing a lot of questions being raised on the BOS app. You may not be able to ask any questions on the live chat box of the Zoom application because this has been disabled. So if you have any queries, any questions, anything to interact with me, please post the question on the BOS app itself. Okay, so are you ready for the class? Not able to see many answers. So please put your response there. That is when we can start. Because if you don't give me the energy, how will you get the energy? Okay. So today we are going to learn or revise a lengthy chapter. This is very lengthy chapter because बहुत सारे exemptions हैं हमको बहुत सारे exemptions cover करने पड़ेंगे कि बहुत सारे concepts समझने पड़ेंगे only then we will be able to understand exemptions chapter. Okay. Are you ready with me? Can we start? Yes, very good. Good response. So the revision classes में आपको पूरे exemptions समझाना बहुत मुश्किल है. So what we'll do is they will have to learn the important exemptions, whatever is relevant and which is important. That only will be the scope of today's discussion. If there's any specific doubt you have, then we will take it up because exemptions, if you don't understand, then to understand that only with book will be difficult. So you need to have a practical answer for it, saying that if there is an exemption given and if you're getting confused, what is the answer for that in practical application? If you understand that, then this exemption will be stored in your brains. Otherwise, just to read theoretically, I feel it will be very difficult. So if you have any questions if you have gone through the exemptions and if you have not understood or it is getting confused, you please ask me so that I'll be able to answer that as well. Okay, to start with, we'll start with basic exemptions and we'll touch base, we'll revise on that. Okay, यहाँ पे objective सिखाने का नहीं है, यहाँ पे objective revise करने का है. So we'll only revise it. Okay. Amendments, yes, I will cover the amendments also specifically. Definitely amendments important hai. I will cover the amendments and wherever I will taking the exemptions, there if there is any amendment, I will highlight it at that point itself. Okay. Firstly, background kya hai exemptions ka? Chargeability, supply, we know supply is there, then chargeability is there. And in supply and in chargeability itself, section 9 में बताया गया है कि whatever is exempted through a notification will be out of tax. उसके अलावा क्या क्या exemption हो सकता है? When a supply is falling under charging section, such supply is definitely chargeable. Chargeability is of goods or services except alcoholic liquor for human consumption. So we cannot say that alcoholic liquor for human consumption is exempted. Alcoholic liquor is out of the charging section. Whatever is not getting taxed, that doesn't mean that it is exempted. Be careful. Don't ever say that alcoholic liquor for human consumption is there. These 5 petroleum products are there. They are exempted. वो exempted नहीं है. वो charge से बाहर है. They are out of the charging provision itself. They are not exempted. Once it is out of the charge, the question of taxability doesn't come. So there they don't have to come into exemption again. They are out of the charging topic itself. Further, so when you have to tax something, you have to see whether it is supply, whether it is falling under chargeability. Then you have to check whether there are any exemption provided. So for goods also there is exemption. For services also it is exempted. If it is exempted, then no tax. Otherwise, on all products which is not in exemption will be under the service, goods and service tax. What is the definition of exempt supply? Exempt supply section 2 subsection 47 says that supply of any goods or services are both which attracts nil rate of tax or which is wholly exempt from tax. And it also includes non-taxable supply. But
If you see the definition of exempt supply, just now मैंने कहा कि whatever is not chargeable or not taxable उसको हम exempted नहीं करेंगे. But the definition of exemption, you see, covers nil rate of tax or tax which is wholly exempt from tax. What is the difference between nil rate of tax and wholly exempt from tax? जीएसटी का रेट नोटिफिकेशन है. In that rate notification, if they have mentioned the rate against any product as nil, that is called as nil rate of tax. Other thing is second, that is where the rate itself is nil, that is tax, and which is wholly exempt through a notification, that is a wholly exempt supply. So there are two different things, but both are included in the definition of exempt. But अलग अलग क्यों दिया है? क्योंकि दोनों को exempted में ही डालना पड़ेगा. That product on which the rate is nil, that is also exempt, and which is coming in a exemption notification, that is also exempt. And it also includes non-taxable supply. It includes non-taxable supply. Any supply which is not taxable, that is also under exempt supply. Exemption could be of various types. ये theoretical है, saying that exemption कैसे हो सकता है? Exemption could be of specified activities, जैसे charitable organization. The activities of a charitable organizations are exempted. Specified suppliers, educational institutions, healthcare institutions, they are exempted suppliers. The supplier itself is exempted. Recipient could be exempted, where the recipient is an individual, and if he's receiving any legal services, then it is exempted. Then specified suppliers and specified recipients. अगर ऐसा supplier और ऐसा recipient है, दोनों का combination हो, then also there could be exemption. So exemption could be of various types. It could be based on nature of supply. It could be based on supplier. It could be based on recipient. It could be in a combination of supplier and recipient. Okay. So these are the types of exemptions which we can get. Exemption किस chapter में section में आता है? Exemption आता है section 11 में. So section 11 says central government may, based on the recommendation of the council on the taxable goods, there is this marker. I'm not able to see the marker today. Okay, not able to get it saying, no problem. So what is the pointer? Okay. Section 11 says the central or state government may, based on the recommendation of the council on taxable goods and services of any specified description, if it is satisfied is that it is necessary in the public interest, by notification exempt generally. Okay, they can give the exemption through notification or through a special order. दो तरह के पावर होते हैं उनके पास exemption देने के लिए, by a notification or special order. जो वो notification में देंगे, that could be either absolutely or subject to conditions. Absolutely मतलब बिना कोई condition के वो exemption दे सकते हैं, या second option है exemption दे सकते हैं with मोहम्मद शोएब ओम गुप्ता. Is my video clear now? Let me see. Looks like there is a problem with the Zoom, but you're able to listen to me, is it? मुझे लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा.
Recording started. Okay. Okay. So we were talking about section 11. Section 11 may you can get a exemption through two ways. One way is through a notification. In that first way, when they give a notification, they have a power to either give the exemption absolutely, that is straight away exemption without any conditions. What could be the conditions? The conditions could be that you have to have restricted input tax credit. कि आपका credit नहीं मिलेगा. That's a condition, right? And second is absolutely without any conditions. One is without any conditions and one is with conditions. Now the exemption could be from whole of the tax or part of the tax. पूरा exemption हो सकता है या part of the tax का exemption मिल सकता है. One of this can be possible. So that is exemption by way of a notification. Second is exemption could be through a special order. नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं या फिर अगर नोटिफिकेशन पास करने के लिए टाइम नहीं है then they can do give away a exemption through a special order wherein under exceptional circumstances explicitly specified in such order. मतलब क्या कंडीशन है ऐसे जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं देना पड़ा और आपको ऑर्डर ही देना पड़े. They say exceptional circumstances you will have to mention and then give that exemption through a special order. And when the exemption is given to a special order, वहां पे it should always be unconditional, बिना condition के, और it should be from whole tax. Part of the tax का आप exemption special order में नहीं दे सकते हो. Okay, so that is the two things in terms of how exemption can be given. That is 11.1, 11.2. Now it says by a provision which says that wherever they consider it necessary for the purpose of clarifying the scope of the exemption, which is given either through a notification or an order, they can give another notification and insert an explanation as the case may be within 1 year. Exemption दे दिया है. Now they have realized when the ground implementation हो रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग समझ नहीं रहे. So to do that error, to do away with that error or to do away with that confusion, what they can do, they can issue another notification within a period of 1 year from the date of that original notification or that original order. और उसमें क्या बोल सकते हैं उसके, they can mention that this is to clarify something that the exemption should be read in this way. Or was notification, generally notifications and order when they have issued, they will be from prospective effect. Prospective का मतलब क्या है? If they are issuing today, the effect will start from today itself. It can't be from a prior date. But the second notification for clarification, what they are issuing, now this clarificatory notification will have retrospective effect. Retrospective means कुछ पहले डेट से इश्यू तो किया आज है लेकिन उसका इफेक्ट 10 महीने पहले या 2 महीने पहले जो भी पुराने डेट से इफेक्ट है उसे कहते हैं retrospective. Now they can give a retrospective notification because there was some confusion with respect to that earlier exemption. So इसीलिए they can give a retrospective notification dated today but effect from the date of that original exemption notification. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ था. They can issue a clarification. लेकिन क्या नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन का आज इशू करके 5 साल बाद उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते? नहीं. 11 the provision doesn't allow that. The original नोटिफिकेशन जो दिया है या ओरिजिनल स्पेशल ऑर्डर जो पास किया उससे 1 साल तक जो भी आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो उसका आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो, नॉट एनीथिंग एल्स. क्लियर है यहां तक? So exemption is absolute or unconditional and one is conditional. अगर absolute और unconditional दे दिया है तो फिर उसका effect that it is mandatory हो जाएगा. उसको फिर आप ऑप्शनल नहीं मुझे exemption नहीं होगा मैं तो टैक्स चार्ज करूंगा वो आप नहीं कर सकते हो इन केस इफ इट इज एब्सोल्यूट और विदाउट एनी कंडीशन. तो यू हैव टू फॉलो इट. बट इफ दे गिव अ कंडीशनल नोटिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्जेम्पशन दे दिया और उसको कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, देन इट बिकम्स कंडीशनल. तो अगर कंडीशनल नोटिफिकेशन है देन इट विल नॉट बिकम मैंडेटरी, इट बिकम ऑप्शनल. बिकॉज कंडीशन फॉलो करना मेरे लिए बस की बात नहीं है. इफ यू गिव इवन एनी स्मॉल कंडीशन आई कैन नॉट फॉलो इट. So conditional notification are optional because
You may follow the condition. If you follow the conditional, then you will get the exemption. If you do not follow the condition, you will not get the exemption. So conditional notifications are optional. Absolute or unconditional notifications are mandatory. Now we'll get into the actual exemptions to understand how it is helping and what are the amendments which are relevant for this. First is charitable activities. Charitable or religious activities में क्या होता है? Any services, who is a charitable organization? That is important to understand. Any entity which is registered under 12AA or 12AB. तो पहले सिर्फ 12AA था, अभी 12AB भी ला दिया, because under income tax you can get a exemption either under 12AA or under 12AB. So if you are registered under 12AA or 12AB, that is the first criteria for a charitable organization to get exemption, that you should first be registered. ठीक है भाई, मैं एक साल वेट करके रजिस्ट्रेशन करके ला दिया हूँ, बिकॉज गेटिंग अ एग्जेम्पशन अंडर 12AA और 12AB इज नॉट सो इजी. उसके लिए भी बहुत सारे यू हैव टू फाइल एप्लीकेशन, फॉलो अप, एक्सप्लेनेशन, से देम व्हाई यू शुड गेट दैट एग्जेम्पशन, बिकॉज इनकम टैक्स से आपको एग्जेम्पशन मिलना है, तो इजी वाली बात नहीं है ना भाई. क्योंकि कोई भी किसी भी काम करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं इनकम टैक्स में 12AA कर रहा हूँ, चैरिटेबल कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में कर रहा है नहीं कर रहा है, दे हैव टू इवेल्युएट. इसीलिए बहुत काफी टाइम लगता है. इन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस वी हैड गॉट अ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आफ्टर 6 months ऑफ टाइम. तो इमेजिन कितनी बड़ी टाइम लगती है. ठीक है. Once you get that registration under income tax, all your activities are not exempted. Only charitable activities are exempted. What are those charitable activities? That is also specified in the notification. What is it specified? Charitable activities, an entity which is registered under 12AA and having any charitable activities relating to public health by way of care, counseling of whom? Terminally ill people who are severely physically, mentally disabled, such as HIV, AIDS infected, drugs, or alcoholic addicts. Okay. Any public health by way of care or counseling of terminally ill, which is severely physically, mentally disabled, and suffering from HIV, AIDS infected, drugs, or alcoholic addicts. उनका कोई care counseling करता है, that is treated as charitable activities. Second is any kind of public awareness, such as preventive health, family planning, prevention of HIV infection specifically. हाँ, कुछ इसके अलावा कुछ है तो फिर उसका exemption नहीं मिलेगा. Care or counseling of certain category of people and public awareness of certain category of people. Public awareness of preventive health, family planning, prevention of HIV infection. This is the only one which is covered. So public health में care counseling and prevention awareness of this is covered. Then advancement of religion, spirituality होगा. मतलब एक charitable organization है which is doing a advancement of its religion. Generally religious charitable organization ही रहते हैं. Correct? If they are doing any advancement of religion नहीं है भाई, I'm not doing anything for religion, ठीक है, then you should be doing for spirituality. Can't be that religion भी नहीं है, spirituality भी नहीं है. It should be in terms of religion or spirituality or yoga. So one of this होना चाहिए. ठीक है. It should be advancement of religion, spirituality or advancement of yoga. योगा को डेवलपमेंट करने के योगा के क्लासेस कर रहे हो आप. Okay, all of that will get covered under charitable activities. So the definition of charitable activities is so wide that it covers all of this. Then last is advancement of educational program, skill development relating to what? Relating to abandoned, orphaned or homeless children. Okay, firstly, education or skill development relating to abandoned, orphaned or homeless children, और फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज पर्सन, जिसको दिमाग की हालत ठीक नहीं है, कुछ कोई ट्रॉमा हो गया है, दे आर फिजिकली अब्यूज्ड है, मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर मेंटली चैलेंज है, या फिर ट्रॉमेटाइज हो गए हैं, उनके लिए आप कुछ एडवांसमेंट कर रहे हो, एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर फॉर प्रिजनर्स के लिए कर रहे हो,
ठीक है, जो लोग केदी लोग होते हैं उनके लिए आप कुछ कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन विल बी जनरली फॉर ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन। जनरली जो हाई एज के हो जाते हैं उनके लिए एजुकेशन सिखाना फिर से मुश्किल हो जाता है। फॉर देम दे विल डू यू विल डू एनी काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। प्रिजनर्स और एनी पर्सन above the age of 65 years residing in rural areas, residing in urban areas के लिए करोगे, then that will not get covered. Residing in rural areas will get covered. And then prevention of environment, watersheds, forests, water life. Preservation, sorry, preservation of environment, watersheds, forests, and wildlife. This is the definition of charitable activity. So Mohammed Shoaib's question is, sir, does it include treatment of such HIV, AIDS, drugs, or any commonly counseling? It covers only counseling, Baba, because it says only care or counseling. But if you do any treatment, so then you are a hospital. करेक्ट, तो फिर हॉस्पिटल हो तो फिर आपको हेल्थ केयर में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में नहीं कहा है। हॉस्पिटल विल ट्रीट समथिंग बट दिस इज kind of away from hospital, wherein hospital also cannot do something. Care or counseling is a long term process where if you be in a hospital you will have to pay charges. So such people who cannot be treated in a hospital, they will come to this counseling centers. Right now these counseling centers are not healthcare, covered under healthcare, because they are doing something which is away from the definition of actual healthcare. Yeah. So this is charitable activities or charitable organization. What else is exempted for an entity which is registered under 12AA, running old age homes for residents above 60 years. यहाँ पे 65 है, be careful. In case of advancement of persons, there it is 65 years, here it is 60 years. जो भी more than 60 years है, उनके लिए if there is a old age home कम age के लिए, and advancement or skill development ज़्यादा age के लिए. That is how you will have to remember. Advancement of old age home for residents above 60 years, where the consideration for boarding and lodging is up to 25,000 per month per person. ठीक है, देन एग्जेम्पशन होगा, जैसे एक वृद्ध लोगों के लिए एक जगह है या काइंड ऑफ रिटायरमेंट होम वेयर पीपल हु आर ओल्ड एज कैन स्टे देयर। जनरली उनके लिए क्या होगा, वेयर दे हैव मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज, और बोर्डिंग लॉजिंग और मेंटेनेंस जो प्रोवाइड करते हैं 25,000 रुपए तक जब चार्ज करते हैं, then that will be covered under this exemption. ठीक है, old age home run by central government and state government also is exempt. ठीक है, जब हम गवर्नमेंट सर्विस पढ़ेंगे that we will time also we will see that old age home run by the central government and state government also is exempt. What else? Services by rehabilitation professionals, जो rehabilitation करते हैं, rehabilitation center that will be getting covered. लेकिन ये rehabilitation centers में जो rehabilitation professional service provide करते हैं उनका भी services exempt होगा when they provide the services at a entity registered under 12AA, or a medical institution, or an educational institution, or a rehabilitation center. So rehabilitation professionals, if they are providing any services, then also it's exempt. Just see this 1 minute on come.
Okay, so rehabilitation professionals we understood. And then what other services? So we are trying to bundle up all the services of specific category under one head. This presentation will be shared with you. So you can take a printout of these charts. So these charts will be helpful for you during your examination also. So that if it is in concise form, it will be easy for you to remember. Then what are the things? Renting of prisons or area of a religious place which is meant for general public. Renting of prisons of a religious place. Mandir, dargah, चर्च कुछ भी हो गया जहां पे ये रिलीजियस प्लेस है उसके प्रेसिंग्स उसके बाउंड्री में जो भी चीज है विच इज दैट प्लेस इज अ पब्लिक प्लेस बिकॉज एनीबडी कैन कम अब उस प्लेस के इर्द गिर्द या उस कॉम्पाउंड के अंदर क्योंकि आजू बाजू तो दूसरा का रहेगा उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो भी एग्जेम्प्ट होगा क्या सर्विस है वो दी स्पेसिफिक सर्विस अगर आपके पास एक मंदिर और उसमें धर्मशाला भी है तो धर्मशाला में आप क्या करते हो रूम देते हो इफ द रूम रेंट इज अप टू 999 रुपीज पर डे अगर 1000 हो गया तो टैक्सेबल होगा दैट्स व्हाई द रेलेवेंस ऑफ दिस 99 999 एंड 49s आर इंपॉर्टेंट इफ द रूम रेंट इज अप टू रुपीज 999 रुपीज पर डे तो फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा देन इफ इट इज अ प्रेमाइसेस और कल्याण मंडप जो शादी के लिए कल्याण मंडप वगैरह रहता है देर इफ यू आर चार्जिंग रेंट अप टू 9,999 रुपीज पर डे देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड एंड इफ यू आर गिविंग शॉप्स और उस शॉप के लिए रेंट कितना कर रहे हो मंथली रेंट ऑफ 9,999 देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड अगर आप 10,000 चार्ज करते हो अगर रूम रेंट के लिए आप 1,000 रुपए चार्ज करते हो तो फिर 1 रुपए पे लगेगा या ऑन द बेस अमाउंट Amol, to your question on you have read old age home for the first time. Good. Read in the new module para 5.48 9D. The exemption is 9D, which says services by an old age home run by the central government or state government or an entity registered under 12AA or 12AB of the Income Tax Act. You will get the answer. This was not an amendment. This was way of holdback. Okay, Mohammed Shoaib is saying अगर मैं 10,000 charge कर देता हूँ, which is just 1 rupee more than the limit, then he's saying on the whole amount it is taxable. What is others' view? Yes, Ayushri. Sir, I think that whole amount will be taxable. Okay, The full 10,000 will be taxable. okay. Divya, what are you telling? Same, sir. According to me, full amount will be taxable. Okay, Abhijit. Same answer, sir. But I want to state here that the chat box is disabled, sir. Can you make it enable so that we can raise our questions in between also? Correct. So that's Not a why we permission. joined in between if at the time of the session, before the start of the session, we had made an announcement that the Board of Studies has deactivated the chat box. So all questions you will have to post it on the Board No, of in Studies. previous lecture they enabled it, so I think they can do it for the same lecture also. So if it is going to be work, then it will be better, sir.
Okay, so everybody is of the view that it will be chargeable on the full amount. That's right, that it will be taxable on the whole amount, not on the differential amount. So if you charge 10,000, if you charge 15,000, it will be taxable on the whole amount and not on only the basic. So that is not a like a kind of a threshold. No. Okay. Similarly with room rent also, if the room rent, if you're charging 1,500, on the whole 1,500 GST will become payable. Now, non-12AA entities also will get a special kind of a exemption, which is any kind of a pandit services. Any pandit or any person who does this religious ceremony, they will also be exempted. Now, they don't have to get registered under 12AA, but it is related to a charitable activity. So that's why we're bringing in here. So a religious ceremony which is conducted by any person, any religious ceremony he conducts. He could conduct ceremony in terms of marriage function, in terms of housewarming, in case of a death, or so many religious ceremonies are conducted. All of that will be exempted. Now, hostel accommodation by trust was earlier exempted, saying that if it is a non-12AA entity, any hotel you provide will get exempted, but that is no more there. That's why it's got striked off. But you have to remember it, saying that agar they want to test your knowledge and say that this room is provided by a charitable organization and another room is provided by a trust as a hostel to the students. So which will be exempted? The one which is given by a charitable organization within the presence of the premises, only that will be exempted. The second one provided by a trust as a hostel will be taxable. Okay. Then the training or coaching services, again by a charitable organization in recreational activities relating to sports. This is an exemption which is given wherein recreational activities relating to sports is by a charitable organization only is exempted, but training and coaching in recreational activities relating to arts and cultures is exempt by any person. That is not necessary that it should be a charitable. So charitable in relation to sports, arts and crafts, arts and culture can be by any person. Okay. So if a community hall charges 50,000 rupees, but hall raises invoice 5 times, will it be exempt or taxable? So it is per day basis. So if it is 1 invoice or 5 invoice, doesn't matter. It is for per day basis. So if they say give separate 5 invoices for 9,999, still it will be taxable because the per invoice is not the case. It is how much is the charge for the community hall per day, right? They may say that we will claim an exemption, but legally that is not correct because the GST is not on the invoice, GST is on the transaction. The transaction is artificially broken up and done this way, but that will be taxable in any case. Okay. Charitable organization, again, we are mentioning what are the other things, services by an entity registered 12AA or 12 AB of the Income Tax Act. Then other services which are specifically covered are services by specified organization in respect of religious pilgrimage, which is KMVNL or Hajj committee. Any religious pilgrimage services which is conducted by Kamau Mandal Vikas Nigam Limited, wherein they conduct this Kailash Mansarovar Yatra, and Hajj committee which conducts the Mecca Yatra. All other religious pilgrimage services will be taxable, but specifically for this KMVNL and Hajj committee, the government has said that services by them will be exempted. This we have covered. Training or coaching by arts and culture can be by anybody. Sports or charitable organization only by 12AA. This also we have covered. This is there, so not much in this. Charitable activities. Yeah, important point, services provided by charitable trust are exempted, but any services provided to a charitable trust will not be exempt. Okay, so charitable organizations will have to get their books of accounts audited, correct? So अब audit करेगा और एक certificate under income tax देगा on utilization of their funds, because 85% of their funds should be used for
charitable purposes. Now, this chartered accountant, when he provides this services to the charitable organization, क्या वो चार्ज जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. The Sir, CA will charge GST Okay. only if he is registered, yes, CA will irrespective of the charge fact that whether he GST. is providing services to charity or charitable institute or not. चार्ज करेगा सर, टैक्सेबल होगा. Yeah, because for him it will be taxable, sir. So when we say about this exemption, one thing which we have to note down is that all of this exemption is for the services provided by these entities. So these entities, charitable organization, healthcare, education, there is an exemption. Healthcare, government, whatever we discuss, the activities by these organizations will be exempted. And when anybody provides services to them, it will be taxable. Renting of prisons of a religious place for general public, activities other than the above will be taxable irrespective of the manner or name. That is, when we have read this consideration, we know that donation, when there is a quid pro quo, it will become taxable. So not all donations are exempted. If there is a donation which you're receiving and the objective is not pure donation, if there is some quid pro quo, then that donation can also get taxable. Okay, the next service is agriculture services. Agricultural services, we know that there could be really a confusion because agriculture goods are involved and agricultural services also are involved. When agricultural goods are involved, then the taxability or non-taxability of the goods is decided by the exemption under goods. Correct? But that is not there for a syllabus. So you may generally get confused saying that is it taxable or no? So you don't get confused because generally agriculture produce are exempted, right? But the services in relation to the agriculture produce is what we are limited discussion will be, so that don't get confused with that aspects. Firstly, registration requirement, whatever agricultural produce agriculturist produces, that is exempted. Okay, so whatever basic agriculturist produces, that is exempted. When agriculturist does not require exemption, when he supplies agriculture is exempted to the extent of produce out of cultivation. So any produce if he's doing and he's only supplying those products, then it will be exempted from taking registration. But the agriculturist may not just be involved in simple agricultural. He may be having a warehouse which he may rent it out, right? That is taxable. So to get that registration limit, we may have to see the whole value, because as we had seen, there is a difference between taxable turnover and aggregate turnover. Aggregate turnover includes the exempt turnover and it also includes the taxable turnover. All turnovers are basically included in the aggregate turnover. So since is aggregate turnover, that is agricultural activities which is exempted, if that is more, and if he's doing some small renting of a warehouse, still he may be liable to register and pay tax on that.
Okay, so agriculturist is exempted doesn't mean that whatever other activities he's doing, that will be counted from scratch, that will be counted from zero. No, that will not happen. Okay, that will be considered overall, because overall annual aggregate turnover is what we have to see. Now, if he's providing services of renting of vacant land, agriculturist is having his own land, he's not using it, he's giving to another person. That renting of vacant land with or without structure incidental to its use, that is, the structure is incidental to its use. He has a land, there is a structure which is being, there's a shop where they're selling it. That is not incidental to its use, because it is nowhere useful to agriculture produce. But if he has a kind of small house or a small hut wherein his produce is getting stored there, is having something so that the agriculture farm laborers can take rest there, then it will be treated as incidental to use. Only in such case that land and that structure will be exempted. Okay, then if he is renting any agro machinery, that if there is an agro machine company, okay, agricultural machine companies which is giving it on rent, so if they charge GST, then the cost of agricultural produce will become high, so that will also be exempted. So renting of vacant land and renting of agro machine will be exempted. Then services related to cultivation, mainly what is agriculture activities, any services relating to cultivation of plants and rearing of life form of animals except horses for food, fiber, fuel, raw materials, that is completely exempted. So when we say agricultural activities are exempted, what do we mean to say? We mean to say that services relating to cultivation of plants and rearing of life form of animals, okay, doesn't include only agriculture. Agriculture के related rearing of animals. So they may rear sheep, goat, cow for food, fiber, fuel, raw materials, whatever things, except horses, because horses is always meant for commercial purpose only, not for any domestic purposes. So horses is the only one which will be excluded. Any other animals, rearing of them will be exempted. Agriculture operations could be cultivation, harvesting, threshing, plant protection, testing. All of that will be agricultural operation, and supply of farm labor is exempted. The process carried at agricultural farm, that is cutting, harvesting, sorting, all of that will be exempted. Those activities which do not alter the essential characteristics but makes it marketable for primary market. So when an agriculturer sows the seed, he gets the harvest, cuts it. So that is not the agriculture, because it has to get sold to the primary market. So up to that primary market, what basic things he does, that is all covered under exemption. But secondary activities, that is, we'll see some examples. All secondary activities which is not meant for primary market, that is all taxable. So the very basic, when they give you any example under agriculture activities, first you have to see whether it is used up to the primary market. It could be that they are doing packaging also, but that packaging will not be for market MRP based marketing. That will be market so that at least he gives the produce so that it can be transported to the primary market. So any activities done up till that point of time will be exempted. Warehousing. Earlier, they used to have a warehouse. In the warehouse, if any fumigation was done, that was exempted. Now that has become taxable. Okay, so government thought that, okay, this fumigation is one activity wherein we can tax, so they have started taxing in. Warehousing of minor forest produce, agriculture produce, and rice. So why are you saying agriculture produce and rice? Rice is covered under this agriculture produce, right? No. Agriculture produce means the basic agricultural produce. It doesn't cover rice. Rice is the basic, is the secondary product. What is the primary marketable product? Paddy. Up to paddy, it is agriculture produce. Rice becomes a secondary market produce. But warehousing of all agriculture produce is exempted, and warehousing of rice also is exempted.
And then warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts, and vegetables. Cereals, pulses, like that's why they're specifically mentioned here, because on that also the cost shouldn't go up. So they have specifically exempted that also. So warehousing of agriculture produce, rice, pulses, cereals, fruits, nuts, and vegetables. दूसरे products जो थे that were also exempted, but that is gone off now. Over a period of time, this exemption will come down. Okay, because government wants to tax everything so that there is no tax leakage. So slowly they are trying to reduce the scope of these exemptions. Then market. So we saw the basic agricultural activities, warehousing activities. Now the activity at the market. So any primary market where the farmers will come and sell, that is called as agriculture produce market. Okay, that is called as generally APMC. Now this APMC में जो भी activities is there, agriculture produce marketing committee, every small town or city will have this. Now that market will collect the market fees. उसमें कुछ बेचना है तो then when you enter you have to pay something, you have to pay license fees, you have to pay rent for storing goods there. All of such things will be exempted. But if there's any commercial stop, वहां पे कुछ बेच रहा है कोई, if they are only coming there to sell it, up to that extent it will be exempted. But if they are having shops, वहां पे ही लोग बेच रहे हैं, not to the secondary market but to retail market, then such commercial shops will be taxable. Okay, then वहां पे commission agent भी होते हैं, and it is legally permitted that you find a commission agent and he will file your customer. The commission agent का brokerage जो है, that is also exempted. Okay, then loading, unloading or packaging, storage of agriculture produce or rice, that is also exempted. And transportation of agriculture produce by road, rail or vessel, that is also exempt. Now when we say agriculture doesn't mean only farming. It also includes pisciculture, which is breeding of fish. It includes sericulture, rearing of silk worms, floriculture, cultivation of ornamental flowers. All of this related activities are also covered under the definition of agriculture. Then agriculture extension services, which are, that is, there may be some organizations which are providing training services. Okay, having melas, some exhibitions, some Kisan clubs, all of that will be exempted, wherein they teach application of scientific knowledge to agriculture practices. All of that will be exempted. Then artificial insemination, जब reproduction करना पड़ता है, where they have to get the farming of the animals faster. Such artificial insemination also will be exempted, except of course horses. So horses will be out of the life form of animals. Also artificial insemination mein horses will be excluded. All of this will be exempted. What is taxable? The process which alters the essential characters. मतलब agriculture produce जो है उसका character change कर रहा है, जैसे paddy को rice में convert कर रहा है, that is taxable. Process which makes the agriculture produce marketable in retail market, that is drying, tinning activities, all of that will be taxable. This, okay, we know all of this. Some questions, and to understand what is taxable and what is agriculture produce and what is not. Fruits is agriculture produce, but when you dry it and process it, that will become a non-agriculture produce. Pineapple is a agriculture produce. Tinned pineapples is not agriculture produce, that will be taxable. Tea leaves, जो पत्ते लेते हैं, that is agriculture produce, but it goes to a factory and then it produces tea or tea powder, that is taxable. Coffee beans also same. Sugar cane is agriculture produce. When the sugar cane gets converted to jaggery, that will become non-agriculture. Whole pulse, okay, if it is not broken, that will be exempted. If it is broken, dehusk, split kar diya, then it will be non-agriculture produce. Paddy is agriculture produce. Rice again is a non-agriculture produce. Green tea, tea for consumption, what you do, that is taxable. Processing is jaggery is taxable. Pulses which are dar, when they are dehusked and split, that is also taxable. Milling of paddy is also taxable. यहाँ पे there was some question. Anmol, your question is clarified. When donation is without quid pro quo, then it is exempted. Correct.
डोनेशन में तो क्विड प्रोक्यो होना ही नहीं चाहिए. इफ इट इज क्विड प्रोक्यो देन इट डजंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डोनेशन. यस. सर, अगर कोई फार्मर जो है उसका लैंड एग्रीकल्चर, वो रेंट पे देता है किसी को, तो उस पे लगेगा ना जीएसटी, या डिपेंड करता है? नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ वीकेंड लैंड विल बी एग्जेम्प्टेड. तो कोई फार्मर है जो उसके लैंड है जो कहीं किसी को दे रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी होटल के लिए दे रहा है या कोई बैंक्वेट हॉल के लिए दे रहा है, थर्ड पर्सन को उसका रेंट मिल रहा है, अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, तो फिर भी जो पैसे फार्मर को मिलते हैं उसको जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर तो नहीं है और रिलेटेड एक्टिविटी भी नहीं है। सो रेंटिंग ऑफ, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी आर वेकेंट लैंड. अब जब वेकेंट लैंड कहा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि फॉर व्हाट पर्पस. ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में जनरली अगर ये दूसरा फार्मिंग के लिए यूज करता है तब ही एग्जेम्प्टेड होगा, बिकॉज अगर कमर्शियल यूज के लिए हो जाएगा तब टैक्सेबल हो जाएगा. होता है ना, क्योंकि ऐसा फार्मर की बहुत जगह जो रोड फ्रंट होती है, हम्म. उन्होंने लॉन्स के लिए दे दिया है, मैरिज हॉल है, बैंकेट हॉल है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना वहाँ पे। हम्म. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। करेक्ट, दैट विल तो वो ऑल बी टैक्सेबल होने वाला है, होगा वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फार्मर। करेक्ट इन हैंड्स ऑफ फार्मर सर्विस प्रोवाइडर. Okay, we'll go to next service, which is educational services. Educational services में हमने सब जगह देखा कि सर्विस प्रोवाइडेड, services provided by a person will be taxable, but in case of educational services, services provided to an education is also exempted. Services provided by were all exempted now, लेकिन अभी services provided to will also be exempted. Educational services which are exempt, which is received, because what it will provide generally, educational जो school college क्या provide करेंगे, education provide करेंगे. So provided by educational to its student, faculty and staff is exempted, and conduct of entrance examination is exempted. But उसके अलावा services provided to a educational institution, which means service it is received by an educational institution, which is transportation of students, faculty and staff of the eligible education institution, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग करते हैं, दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड अप टू अ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल. मतलब प्री स्कूल से लेके विच इज किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी, प्री केजीज, वहां से लेके 10th स्टैंडर्ड के बच्चे या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हायर सेकेंडरी स्कूल खत्म होता है वहां तक जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे in terms of transportation, food or security services, that will be exempted. Services relating to admission will be available for exemption for all educational institution. और फिर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स बियॉन्ड हायर सेकेंडरी, बिकॉज अगर बच्चों को आप एजुकेशनल ऑनलाइन में दे रहे हो दैट उसको एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा. इफ यू आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल टू स्टूडेंट्स हु आर बियॉन्ड द 12th or the higher secondary school, that will be exempted for them. Clear? Now isme what else is the point for discussion is, this is 5 types of educational institution. wahan pe first 3 types will be exempted, and conducting of examination will be exempted. Services provided to a part of a curriculum for a recognized qualification, wherein यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन. मतलब 12th या 10th के बाद यू आर गेटिंग अ डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंसी
you're getting a engineering, whatever curriculum hai, for which you're getting a recognition, you will get a recognized qualified which is in India, then it will be exempted. For what all services? Services relating to admission and online journal. And third category है educational institution providing education as a part of approved vocational education course. जैसे कोई carpentering, plumbing वो सब सिखाते हैं. That is kind of vocational education courses. Now such vocational education courses उस institute को क्या exempt रहेगा? Only admission. Okay. Any other services you provide to them, that will be taxable. But एक चीज समझना चाहिए, all of these institutions जो तीन category किए गए हैं, if these institutions are providing any educational, any vocational training, that will all be exempted. So the bifurcation is, or the segregation is, when you provide services to these educational institutions, then the type of educational will decide your exemption. Okay. What is vocational? Vocational हमको पता ही है. A course which is run by an industrial training institution, ITI करके famous है, industrial training institution or an industrial training center affiliate to the National Council for Vocational Training, NCVT के साथ recognize होना चाहिए और उनका जो course है वो approve होना चाहिए, तब आपको माना जाएगा that you are a approved vocational education course. Entrance examination. An authority board which is set up by the central government or state government for conduct of entrance examination, क्योंकि आपको entrance में filtering करना पड़ता है, so you conduct entrance examination. For entrance examination, admission to educational institution shall be treated as educational institution for this limited person. Therefore, GST will not apply. So there is a clarification which says that अगर आप कुछ authority या board setup है और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लिया है फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जनरली हम इंजीनियरिंग कॉलेज में देखते हैं दैट गवर्नमेंट सीट देती है. नो, गवर्नमेंट सीट के लिए आपको उनका एग्जाम लिखना पड़ेगा. वॉट एवर दे आर कंडक्टिंग एंड दे कलेक्टिंग चार्जेस, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन रहेगा बिकॉज दे विल बी ट्रीटेड एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द admissions or conducting the entry points. GST is also exempt on input services relating to admission to or conduct of examinations such as online testing services, result publication, printing of notification for examination, admit card, everything. That is also exempted. But GST is applicable to other services provided by such boards, namely accreditation services. जैसे college को एक accreditation दे दिया गया है कि you are a NCERT. ठीक है, कुछ ऐसा accreditation मिलता है for which college has to pay. That is not a educational institution. Yeah, that is not covered under that exemption. So that will become taxable. Food services, mess या canteen जो service provide करता है, that will be exempted. But if catering services are provided to by anyone other than educational institution, ठीक है, जो वो कैंटीन है स्कूल के बच्चों को ही प्रोवाइड करती है, स्कूल के स्टाफ को ही प्रोवाइड करती है, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड. लेकिन वो कैंटीन जो है, ये नहीं कि स्कूल के बाहर कैंटीन है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा. स्कूल के बाहर जो कैंटीन है विच इज प्रोवाइडिंग फूड टू जनरल पब्लिक, तो वो ये नहीं बोल सकते कि आई एम विद इन द प्रीमाइज ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मुझे एग्जेम्पशन रहेगा. नहीं, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज कि बच्चों को जब आप कुछ फूड प्रोवाइड करती है तब इट विल बी एग्जेम्प्टेड. बट इफ दे आर प्रोवाइडिंग टू जनरल पब्लिक, पेरेंट्स के लिए, दैट विल बी टैक्सेबल. सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल. आंगनवाड़ी इज ऑल्सो प्री स्कूल. ये डाउट था कि आंगनवाड़ी में स्कूल इनफॉर्मल सिखाते हैं, स्टिल मिड डे मील का सर्विस बहुत सारे स्टेट्स में है. विल दैट बी एग्जेम्प्टेड? क्लैरिफिकेशन आया है कि दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड. व्हाट एल्स इज एग्जेम्प्टेड? बोर्डिंग स्कूल्स, जहां पे रेसिडेंशियल है, तो सर वहां पे तो फिर आराम करते हैं बच्चे. फिर भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप आराम करने के लिए नहीं भेजते हो, वहां पे एजुकेशन के लिए ही भेजते हो. सो एनी काइंड ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल्स, द प्राइमरी, सो इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई. द मेन सप्लाई इज ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टडिंग, डिग्री लेना है उनको, 10th पास करवाना है, करेक्ट. सो दैट फर्स्ट लेवल इज टीचिंग एंड स्टे इज एंसिलरी. बच्चे घर पे बिगड़ जाते हैं, इसलिए आप बोर्डिंग स्कूल भेजते हो. So main objective is studying itself, that is also exempted. Dual qualifications where one is recognized will become a mixed supply.
तो 2 क्वालिफिकेशंस आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाएगा, बीकॉम की डिग्री भी मिल जाएगी, बैचलर्स डिग्री, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और साथ में आपको फॉरेन अफिलिएटेड कोर्स का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो दोनों कोर्स अलग से चल सकते हैं ना, दोनों को इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन इंटीग्रेट कर दिया गया है थोड़े थोड़े कॉलेजेस ने। So once it is integrated, one is exempt, one is taxable. So it is a mixed supply. In case of a mixed supply, what will be the GST rate? सर जिस किसी का भी ज्यादा होगा टैक्स रेट, उसका जीएसटी रेट होगा Correct. पूरे सप्लाई को। Exactly. So educational तो exempted है, तो मैं जो लोकल डिग्री दे रहा हूँ दैट इज 0 रेटेड, और फॉरेन कोर्स जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो 18%। तो द इम्पैक्ट विल बी दैट ऑन होल एक्टिविटी जीएसटी एट 18% लग सकता है, हायर रेट। करेक्ट। सो विच एवर इज द हायर रेट लग जाएगा, और फुल कोर्स जो आपके नॉर्मल एजुकेशनल एग्जेम्प्टेड है उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। नाउ अनदर क्लैरिफिकेशन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जनरली लॉन्ग टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपको 2 साल का मैनेजमेंट कोर्स है, बट उसके अलावा वो लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज रखते हैं, वीकली कोर्स, मंथली कोर्स। नाउ दोज कोर्सेज कुछ तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, बट दैट सर्टिफिकेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, बिकॉज ये जो सर्टिफिकेशन है दैट्स नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन, दे विल ओनली गिव यू अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। So IIM is generally considered here because they raise the query. Any educational institution which runs the short-term courses, जिसके लिए आपको participation certificate मिलेगा, that will all be taxable. Fees charged by prospective employers for campus recruitment. आप कैंपस में, मेरे कैंपस में आइए, हम आपको अच्छे स्टूडेंट्स देंगे, ओके, उसके लिए जो कंपनीज आती है उनको कुछ पे करना पड़ता है, then that is also taxable. Entrance fees is exempted. Eligibility certificate कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी कॉलेज देती है स्टूडेंट्स को, दैट इज इन द कोर्स ऑफ एजुकेशन, सर, बट जो वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके लिए देना पड़ता है, और जब वो खत्म करके छोड़ देंगे तब तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट इज स्टिल रिलेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। मैरिटाइम कोर्स अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इसको भी इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देन हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज इज वेरी सिंपल, कि आप हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जेम्पशन रहेगा, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय whom? It should be provided by a clinical establishment. What is a clinical establishment? Clinical establishment is a hospital, nursing home, any kind of laboratory which does diagnostics or investigation, blood test, urine test, heart attack, ECG, जो भी टेस्टिंग के लिए आप लैब जाते हो, टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आते हो, जब डॉक्टर लिखता है टेस्ट करवा के आओ, तो डॉक्टर का फीस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड एंड लैब फीस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। और नर्सिंग होम भी होता है जहां पे सिर्फ नर्सिंग करते हैं, छोटा हॉस्पिटल, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। सो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय सच क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्टेड। Now, what is exempted? Healthcare service is exempted. Healthcare service किसे कहते हैं? Healthcare service means any service by way of diagnostic, treatment or care of illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy. Okay? Any kind of diagnosis जो करते हैं, बुखार हो गया, बुखार के लिए एक डायग्नोसिस करते हैं, लाइक मुझे कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाता हूँ, दैट इज ही इज डूइंग अ डायग्नोसिस। और मैं बीमार पड़ गया फिर जाता हूं तब वो ट्रीटमेंट करता है। सो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एनीथिंग और केयर ऑफ इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, abnormality और प्रेगनेंसी विल बी कवर्ड in which method? In any recognized system of medicine, that is Indian recognized system of medicine. एलोपैथी, जो इंग्लिश दवाई, जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा एंड उनानी। बट चाइनीज मेडिसिन भी आते हैं,
रेकी, अक्यूप्रेशर, चाइनीज मेडिसिन, दीज आर ऑल नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वो जब आप रेकी वाले के पास जाते हो, अगर वो जीएसटी नहीं पे कर रहा है, इसका मतलब समझ लिए कुछ गड़बड़ है, बिकॉज ही इज लायबल टू पे जीएसटी, उसको हेल्थ केयर में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, hospital, nursing home or a lab. Second is any kind of a authorized medical practitioner, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उसे authorized medical practitioner करते हैं, उनका services also exempted, क्योंकि वो services हॉस्पिटल को देते हैं, हॉस्पिटल हमको देता है, the whole chain is exempted. Then paramedics, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स पैरामेडिक्स भी रहते हैं। पैरामेडिक्स क्या करते हैं, आपको फिजियोथेरेपी कराते हैं, या जो हॉस्पिटल में आप जाते हो स्टाफ रहते हैं, नर्सेस, सिस्टर जिसको बोलते हैं नर्सेस, दे आर ऑल कॉल्ड एज पैरामेडिक्स। जो एक्सरे का मशीन ऑपरेट करता है उसे कहते हैं टेक्नीशियंस। ऑल ऑफ दीज आर पैरामेडिक्स, उनके सर्विसेज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द स्टार से? इट सेज दैट भैया एक अमेंडमेंट आ गया है, हेल्थ केयर जो है ना, जो पैसे वाले होते हैं या फिर जिनकी बीमारी होती है, उनको आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, क्या है ये सब स्पेशल रूम्स है। तो नॉर्मल रूम के अलावा स्पेशल रूम्स दिए जाते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि क्रिटिकल केस है, उनको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है, वहां पे डाल दिया। अब वहां का रेंट अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, नॉर्मल रूम। लेकिन ये आईसीयू, एनआईसीयू, आईआईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, वॉट एवर, आईसीयू, सीओसीयू जो भी है, ठीक है, अब तक तो पहले एक था, अभी उनको 4 बना दिया गया है। तो ये आईसीयू वगैरह में जो भी आप एडमिशन लेते हो, 5,000 के रुपए ज्यादा है तो फिर हॉस्पिटल उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है। फिर क्या है, एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम या होम टू हॉस्पिटल, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। देन इट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। भाई बाल उड़ गए हैं, मेरे को बाल डलवा दो, ये हेल्थ केयर नहीं है, ये आपको ब्यूटीफुल करने के लिए है। तो सच हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ हेल्थ केयर सर्विस। कॉस्मेटिक प्लास्टिक, भाई इसमें इज इट फॉर ब्यूटिफिकेशन देन टैक्सेबल, बट इफ इट इज फॉर रिस्टोरेशन, रिस्ट्रक्टिव अनाटमी या फिर फंक्शंस ऑफ द बॉडी में कुछ डिफेक्ट है, अबनॉर्मलिटी है, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, बचपन से ही आपके लिप ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दिया है, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप, आपका नाक टेढ़ा है, आपका नाक किसकी तरह नहीं है, वो शाहरुख खान की तरह नहीं है, उसकी तरह मैच करना है फॉर ब्यूटिफिकेशन, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक, जो एनिमल्स के लिए करते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। बाकी बायोमेडिकल वेस्ट एग्जेम्प्टेड था, उसको टैक्सेबल कर दिया गया है। कॉर्ड ब्लड सेल्स टैक्सेबल था, एग्जेम्प्टेड था, उसको भी टैक्सेबल कर दिया गया। सो एनीथिंग, ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर में आपको घुमाने के लिए ये पूछ सकते हैं कि हेल्थ केयर एग्जेम्प्टेड है, नाउ यू हैव अ कॉर्ड ब्लड बैंक who is collecting blood when the child is born, will it be taxable or exempted? सीधा taxable। डॉक्टर ने पूरा अपना ये लिया, क्या बोलते हैं, ग्लव्स लिया, इंजेक्शन लिया, उसको फेंक दिया, उसको फिर रिसाइकल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट को आप चार्जेस देते हो, इन रिलेशन टू हेल्थ केयर हो गया, वो एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है? वो भी अभी टैक्सेबल है। सर होम्योपैथी, होम्योपैथी सुना है नहीं अरुण जैन? होम्योपैथी भी एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर को जाते हो, अब तब वो उसकी छोटी छोटी गोली गोली देता है, व्हाइट व्हाइट कलर की गोली देता है, पाउडर देता है, दैट इज कॉल्ड एज होम्योपैथी ट्रीटमेंट। वो भी इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, वेरी कॉमनली यूज्ड। रूम रेंट टू इन पेशेंट्स, जाते हो आप हेल्थ केयर के लिए लेकिन रूम में सो जाते हो, कोई रूम में सोने के लिए जाता है क्या? वहां पे ड्रिप्स चलते हैं, इंजेक्शन चलते हैं, आप ऑब्जर्वेशन में रहते हो, इसीलिए रूम रेंट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, रूम रेंट विल बी एग्जेम्प्टेड। सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है पेशेंट को, ऑल ऑफ दैट इज एग्जेम्प्टेड। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी एंड फीस टू डॉक्टर्स, ऑल ऑफ दैट इज एग्जेम्प्टेड। फूड टू इन पेशेंट्स, भैया खाने के लिए आप नहीं जा रहे हो वहां पे, यू आर गोइंग फॉर अ हेल्थ केयर, वहां पे हॉस्पिटल ने बोल दिया है कि खाना हमारे यहाँ से ही खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिन का 500 रुपए, उसके लिए भी एग्जेम्प्टेड, बिकॉज ये हेल्थ केयर का कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया है। आउटसाइड कैटरर प्रोवाइडिंग टू हॉस्पिटल विल बी टैक्सेबल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू हेल्थ केयर विल बी टैक्सेबल।
Food to unadmitted patients, taxable. Food to visitors, also taxable. Any services other than healthcare, जैसे शॉप करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम रेंट पे दे देते हैं, अपने जो सैंपल्स लेते हैं वो कभी कंपनीज को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल. एक क्लैरिफिकेशन आया है नया वाला विच मे बी रेलेवेंट फॉर यू. द जीएसटी ऑन सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी in vitro fertilization. IVF fertilization uses the technology called ART procedure. So ये clarification आ गया है कि that services of this IVF are also covered under this definition of healthcare for the purpose of above exemption notification. मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनके लिए एक नया टेक्नोलॉजी आ गया which is called assistive reproductive technology. Now this assistive reproductive technology also gets covered under this exemption is what this clarification says. Sir, room charges except ICU if exceeds 5,000 is taxable? Nahi. Only if it is ICU, NICU, ICCU, NICU, then it is taxable. एक्सप्लेन बायोमेडिकल वेस्ट पॉइंट. भाई ये तो एग्जेम्पशन से हट ही गया है, फिर भी आप पूछना चाहते हो, ठीक है. जो बायोमेडिकल वेस्ट, आप जो वेस्ट करते हो वो कूड़े में फेंक सकते हो, लेकिन डॉक्टर का जो वेस्ट है आप वैसे नहीं फेंक सकते हो. इसलिए उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होता है, उसे कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट. अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनी है, वेस्ट लेगी, उसको रिसाइकल करेगी, उसके लिए आपसे चार्जेस लेगी. तो ये चार्जेस इज टैक्सेबल, उसके ऊपर बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी टैक्स चार्ज करेगा. Okay. The healthcare services provided that nothing in this entry shall apply to services provided by a clinical establishment by way of providing room having room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving. Okay, so normal room charges agar 5,000 hai, except ICU and ICU. Okay, so I stand corrected. You are right, Swati. कि आपका normal room charges अगर 5,000 के ज्यादा है, then it will be taxable. ICU NICU के लिए अलग रख दिया, उसके लिए कुछ लिमिट नहीं रखा है. So ICU NICU, all of that will be at the normal rate, that will not be taxable. But other than ICU, NICU, and CCU, normal room charges, if it is more than 5,000, then it is taxable. You are right. And what is cord blood bank, Anmol Patwa? Jab a small child is born, it has a umbilical cord. In that umbilical cord, they feel that there is lot of blood, which is the first blood. Now, if you use that blood, lot of diseases can be recovered. Okay, like thalassemia and all of those treatments can be restored. That's why they store this blood. So this is called as core blood bank. This was exempted. Now that is also getting taxed. You're right, Swati. So I stand corrected in terms of that healthcare services discussion on 5,000 rupees. Room other than ICU, CC, ICU. So it is not room in ICU. It is other than ICU. Normal room का जो charge है, अगर वो above 5,000 rupees है, then it is taxable. Okay. We'll take a 10 minutes break here and come back and discuss other. First, what we'll do is in the end, instead of mentioning the updates, we'll go with the updates first, then we'll go to other services.
So can we continue? Okay, clear till now? You got these exemptions. Now we'll straightly go to the amendments which are relevant for you, so that if you cover those amendments, which is very important, so that we cover those amendments and then proceed with other exemptions. So we'll go to the statutory update book, which is relevant for January 2025 and on exemption topic, so that we are covering what is there under exemption. Okay. Are you able to see statutory update exemptions from GST? So what all are the things which will be exempt from GST? Is amendments जो हैं, one is in the existing exemption, what they have amended is earlier satellite launch services was restricted to these satellite launch services supplied by Indian Space Research Organization or Antrix Corporation Limited or New Space. So they specifically mentioned that any satellite services done only by these entities will be exempted. Now they have removed these names, which means satellite launch service will be exempted, but not restricted to these companies. So satellite launch service कोई भी provide कर सकता है अभी. ओके, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का अप्रूवल वगैरह चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो था इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, न्यू स्पेस, वो उनके लिए नहीं होगा, सबके लिए ओपन हो गया. सो एनी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाई कोई भी कंपनी का नाम दे दे, बाई एनी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एग्जेम्प्टेड. एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, दे कैन ऑल्सो डू इट. मेरे ख्याल से ये किसके लिए आया है? इफ यू सी द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस अक्रॉस द ग्लोब, Elon Musk also has a company. He also launches the rockets and satellite he launches. तो वैसा कुछ scope के लिए I think they have amended, and all satellite launch services by any company will be exempted. Second amendment, in all the amendments if you see, जो है earlier only services by Department of Post was taxable. Okay, and wherein जैसे ये एग्जाम्पल है, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब गवर्नमेंट के सर्विसेज वेर एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग विच वेर टैक्सेबल, मतलब पोस्टल वेर टैक्सेबल, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, एयर वेजल्स वेर टैक्सेबल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स वेर टैक्सेबल, and any services other than above provided to a business entity. So these were the ones which were taxable. Now, what is included in this is, when we discuss government services, you will get clarity. But the amendment in all of this is जहां पर भी हम पढ़ते हैं कि Department of Post will be taxable, जो आप post भेजते हो, that will all be taxable. वहां पे railways and the Ministry of Railways add कर चुके हैं. So all the major amendments are this itself, that any services provided by post, provided by railways will be taxable. Earlier railway के services exempted थे, अभी post and railway both of them will be taxable.
that is covering under exemption under para number 6. Then under 7 वहां पर भी सेम है, पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. देन यहाँ पर भी सेम है, 8 में भी सर्विसेज बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट वेयर ऑल एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो रेलवेज अगर किसी दूसरे मिनिस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट था. अभी रेलवेज अगर एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है तब टैक्सेबल हो जाएगा. देन all of the exemptions which were there were all there now. And new exemptions, new exemption which is introduced is services provided to a government authority. So हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को विद रेस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन. That will all be exempted now. So only one amendment, one addition which has happened under the exemption is if you are a company, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है, उनको स्लम डेवलपमेंट करना होता है, दे विल नॉट डू इट, दे विल गिव अ कॉन्ट्रैक्ट. वो टेंडर रेज करते हैं एंड यू आर विनिंग द टेंडर. और या फिर पानी सप्लाई करना है और उसके लिए टेंडर फ्लोट करते हैं, यू आर वन द टेंडर. Now once you have won the tender, you will do that work and raise an invoice to the government. So this invoice what you raise from 20th October 2023 आपको GST चार्ज नहीं करना पड़ेगा. अर्लियर चार्ज करते थे, तो इसीलिए अभी एग्जेम्पशन ला दिया गया है. सो एनी सप्लाई यू डू टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपैलिटी है, दे आर ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उनको जब आप बिल रेज करोगे फॉर व्हाट, फॉर दी स्पेसिफिक सर्विसेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट, इन 5 चीजों के लिए जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर ऑल्सो वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, बाकी सब एस से शुरू होता है, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट. ठीक है. WPSSS on 5 services when you're providing it to government, then it is exempted. You don't have to charge GST. सही है. इतना ही changes है in respect to the statutory update for exemption. Now coming back to our slides. हमारी स्लाइड में और क्या है? We are exactly on this government services. तो जहां पर भी मैं पोस्टल वगैरह बोलूंगा, ठीक है, वहां पे पोस्टल प्लस रेलवेज विल बी इंक्लूडेड. नाउ गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होगा? प्योर सर्विसेज, अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्योर लेबर सर्विसेज या composite services where goods portion is just 25%, then also it is exempted. And from one government to another government is exempted, except the list हमने देख लिया, postal, रेलवे एंड अदर कैटेगरी. करेक्ट. पोस्टल, रेलवे और हमने अदर कैटेगरी देख लिया है, विच इज पोस्टल, रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेजल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स. क्योंकि इसमें बाइफर्केशन वेदर यू आर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट मुश्किल हो जाता है. सो ऑल ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल. देन नॉन, एज हमने 7(2)(b) में देखा है डेफिनेशन में, दैट एज अ पब्लिक अथॉरिटीज वॉट एवर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, दैट इज ऑलरेडी नो सप्लाई. व्हाट इज दैट? Activities which is covered under Article 243 and 243G and 243W, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज है, जो जिसके लिए गवर्नमेंट कलेक्शन करती है, पंचायत सर्विसेज है, जो हम टैक्सेस भरते हैं, that is a kind of consideration, no? So any services provided by a municipality or panchayat is there under constitution under Article 243G and 243W, that will be treated as non-supply. Then supply of alcoholic liquor license, we have seen that उसके लिए एक notification है, based on that notification there is no GST. Department of Post to government exempted था, अभी ये exemption हट गया है. So Department of Post providing services to government will be taxable, to others will be again taxable, and other services, inland post, postal services, except ordinary post where the gram is less than 10 grams, these will be exempted. Okay, so inland post, postal cards, money orders, and ordinary post where the value is less than 10 grams, that will be exempted. बाकी सब taxable हो जाएगा. Okay, then port, airport services is also taxable because government is doing so many services. So इसके लिए the government services is very broad. So
इनलैंड पोस्ट, पोस्टल कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स एंड ऑर्डिनरी पोस्ट लेस देन 10 ग्राम, सिर्फ ये 4 पोस्टल सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। इनके अलावा बाकी सब पोस्टल सर्विसेज टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देन पोर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज, जो एयरपोर्ट में फ्लाइट रुकता है उसके लिए एयरपोर्ट चार्जेस, द चार्जेस, हॉलिंग चार्जेस टू द एयरपोर्ट, और जब आप टिकट परचेज करते हो चार्जेस लगता है, दैट इज आल्सो चार्जेस बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। तो बेसिकली पोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर फुल टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की बसेस वगैरह चलती हैं, क्या उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। All other services when they are providing to a business entity, on that, if a business entity is involved, then they will pay reverse charge. So ये services forward charge, all other services will be under reverse charge. लेकिन exemption मिलेगा कब? If their annual turnover in the previous financial year is less than the registration limit, then it will be exempted. If your limit is less, if your limit is more, then it will be taxable. One more exemption is if it is a non-government entity, you have to check if the consideration is less than 5,000, then it will become exempted. If your consideration is more than 5,000, then again reverse. Okay. Now, other exemption is, I will just zoom this. Yeah, जो special services है ये exempted है. Any लोन विच इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको लोन चाहिए, लेकिन गारंटी पूछ रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव अ गारंटी। तो ये जो गारंटी दे रहे हैं उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, देन दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड, बिकॉज गारंटिंग लोन्स टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। देन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन एफएसएसएआई के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू पे सम रजिस्ट्रेशन फीस, सो दैट रजिस्ट्रेशन फीस इज एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज इज एग्जेम्प्टेड। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है, उसके लिए कुछ चार्जेस कलेक्ट करती है, तो भी एग्जेम्प्टेड है। Tolerating non-performance of a contract, any fines or liquidated damages will also be exempted. Assignment of right to use natural resources to an individual farmer will also be exempted. Deputing officer, office after officers, inspection, container stuffing के लिए जो extra officer के लिए रखते हो और उसका charges लेते हो, that is also exempted. Excess royalty collection contractor to collect royalty on behalf of central government, that is also exempted. Service of rehabilitation professional, we have already read, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, because that rehabilitation professional can provide services for the service run by healthcare or services by the government, दोनों के लिए exempted हो जाएगा. Then services of old age home, where the consideration is up to 25,000 rupees, वहां पर भी same, यहाँ पर भी same. So that old age home can be run by a charitable organization or it can be run by the government. Both of them will be exempted. So this is the crux of the government services. Any other thing in this? No, nothing. What is 10 gram? 10 gram is the weight, Mohammed. जब हमने, I'll just show you there. जो पोस्टल ऑर्डिनरी पोस्ट होता है ना, उसको वेई किया जाता है। अगर उस पोस्ट के अंदर सिर्फ लिफाफा है, पेपर है, तो फिर उसका काम 5 ग्राम होगा। तो अप टू द लिमिट ऑफ 10 ग्राम है, ठीक है, तब आप पोस्ट लगा के दे सकते हो। मोर देन 10 ग्राम है तो फिर आपको पोस्ट वाले के पास जाना पड़ेगा, ही विल टेल यू द स्टैम्प एंड एवरीथिंग, एंड उसके ऊपर वो जीएसटी लगाएगा। अप टू 10 ग्राम्स जो है पोस्ट, उसके ऊपर एग्जेम्प्टेड रहेगा, सिर्फ आपको पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा। अबाउट 10 ग्राम्स है तो फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। गुड ऑब्जर्वेशन। Clear? We are going fast because you have to do a lot of exemptions, and I'm sure you are aware of these concepts. Okay, if you are ready, we can go to the next exemption. Okay, next exemption is with respect to construction services. Any kind of construction services which you are providing to
PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, या उसे ये भी कहते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ऑल मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन कहिए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना कहिए, उसके लिए आप जो भी कंस्ट्रक्शन एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्टेड। मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन तो टैक्सेबल रहेगा ही, लेकिन अगर आप PMAY स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड। Then construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to a single residential unit, अगर आप एक घर बनवाते हो उसके लिए जब जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस है, that will also be exempted. Okay, other than a part of a residential complex, residential complex के लिए वहां पे तो टैक्स लगेगा ही. What is the tax rate? If it is affordable housing 1%, if it is non affordable housing 5%. लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम के लिए या फिर सिंगल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी आप करते हो तब दैट विल बी एग्जेम्प्टेड. Then services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, installation of infrastructure for extending the electricity distribution network up to the tube well of the farmer. Now, this is a typical case wherein I am laying an electricity line in a new area. And now the farmer says that electricity, what you're laying, you lay it up to my tube well. वहां का इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है आप मेरे ट्यूब वेल तक यूज कर लो. ट्यूब वेल का मतलब है जहां पर मैं कैन यूज फॉर गेटिंग द वाटर, right? For getting the water, I will install a motor which is called a tube well. Now that needs electricity. You extend your electricity line up to my line. They will say, no, my line is going in this way. Why should I deviate? I will pay you some consideration. Okay, we will do it. So this extra consideration, what this electricity company is getting, is benefiting the farmer. So that will also be exempted. Then supply of TDR, FSI, long-term lease of land by landowner to a developer will also be exempted. Transferable development rights, जब किसी ओनर के पास एक लैंड गवर्नमेंट ले लेता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन. अब जब कंपल्सरी एक्विजिशन करता है गवर्नमेंट, तब उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. दे विल गिव सम कॉम्पनसेशन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पनसेशन, सिंस गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, government will give something called as a TDR certificate, which is called as a transferable development right certificate, जिससे आप, अगर आपको गवर्नमेंट कोई, आप कल के दिन कुछ नया कंस्ट्रक्शन करते हो, आपके पास 5 फ्लोर बनाने का अप्रूवल है, लेकिन इस TDR से आप एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना सकते हो. दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस TDR. और इस TDR को जब लैंड ओनर किसी डेवलपर को बेचता है, ओके, TDR या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये जब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट किसी के पास है, वो गवर्नमेंट को, या नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हम निकल गए, वो अगर किसी डेवलपर को बेचता है तब उसके ऊपर GST नहीं लगेगा. गॉट इट? सो एनी TDR, FSI या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर देते हैं, तब एग्जेम्पशन है, व्हेन प्रोवाइडेड कि दैट कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स जो मैं TDR सेल करता हूं डेवलपर को, डेवलपर उससे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके पूरा बेच देना चाहिए. कब? बिफोर गेटिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट. उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेच देना चाहिए. अगर, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेचेगा तो वो कस्टमर से GST कलेक्ट कर सकता है. आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी फ्लैट्स बेचेगा उसके ऊपर वो GST कलेक्ट नहीं कर पाएगा. तब क्या होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ अनसोल्ड फ्लैट्स, प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे उसको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा या फिर GST पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड 5% इन केस ऑफ नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग. समझे आप? One is the landowner has the TDR. Now this TDR you're giving to a landowner, so landowner will use it provided वो रेवेन्यू लेके आता है गवर्नमेंट को. नाउ इफ ही सेल्स ऑल द फ्लैट्स बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया, फाइन. बट ही इज यूज दिस TDR, इसके ऊपर GST नहीं पे किया है और फ्लैट्स भी अनसोल्ड हो गए, तो फिर वो जब फ्लैट्स बेचेगा उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करेगा. तो फिर गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है, आप वहां पे तो सेल
के ऊपर जीएसटी पे नहीं करोगे, लेकिन आपने जो टीडीआर वगैरह लिया है उसके ऊपर जो हमने एग्जेम्पशन दिया है ना, आप उसको विड्रॉ कर दीजिए टू द फुल एक्सटेंट। नहीं नहीं, मैंने लिया था और मैंने बनाने थे 100 फ्लैट, मैंने 100 फ्लैट्स बना दिए, 30 फ्लैट्स बेच दिए, 70 बाकी रह गए, तो फिर टू द एक्सटेंट ऑफ 70% ऑफ दैट टीडीआर वैल्यू यू पे द जीएसटी। गॉट इट? very important this is, because real estate abhi trending mein hai, you may expect some question on this saying that how much will the GST payable on the date of receiving of completion certificates for which the developer has received the TDR. No more doubts? What is the entry number for TDR point? Yes, I will just tell you. Why are you not finding it in the material? Are you using the latest material? One minute, I'll just show you which line it is. Exemption number 41A in your material 41A. This is development rights. Okay.
Okay, this is serial number 41A of the notification. They have not mentioned the serial number in your book. So I'll see where it is mentioned. I will find out where it is in your book and I'll tell you, because that's the place where I have taken it from. In the next class, I will PDR in book. Yeah. Anmol, remind me in the next class. I will answer your point and then proceed further. Okay. Now let's go to other exemption. One is construction. Okay. Now transportation services. Transportation of can be two types: transportation of passengers and transportation of goods. If it is transportation by air, all persons who are using air like flight, aeroplane, they can afford GST. तो फिर उसके ऊपर exemption नहीं रहेगा. So all air transportation will be taxable, but transportation of air by embarking, that is starting or landing at any of these places, that is Batman's, this 8 places, 9 places. If you are doing any air transport, the government wants to encourage these places. Northeast places hai mostly. So Northeast mein lot of travel should happen. That's why they have told this airlines companies that you charge less freight. They said, okay, we'll charge less freight, but passengers are still not coming because you are charging GST. So they said, okay, we'll not charge GST also. They gave exemption for this. Batmans, which is Bagdogra, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Assam, Nagaland, and Sikkim. These 9 states, if you are doing any kind of a travel, you're landing there or taking off from there, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा. Simple. Batman is exempted. If you are doing any travel, we'll do with passenger transportation first. Then if you are doing any transportation by road, now you can have contract carriage or stage carriage. Contract carriage and stage carriage पे travel में फर्क है. That stage carriage is from one state to another state. Contract carriage is within the state. Okay. Contract carriage is hired for a period of time. That is when recipient is free to decide. That is called as contract carriage. And stage carriage is when you transport from one stage to another stage. That is, there are fixed stoppages. That is called as stage carriage. Now, contract carriage, if you're doing any transport through non-AC, it is exempted. AC will be taxable. Radio taxis is taxable. Tourism is taxable. Conducted tour and charter or hire, all of this is taxable. Basically, non-AC contract carriage will be exempted. Everything else will be taxable. Stage carriage also non-AC will be exempted, but AC will be taxable, which is that local buses and interstate buses जो है वो समझ लीजिए, that is stage carriage. Now, apart from this, if you have metered cabs, auto rickshaws and e-rickshaws, all of this is exempted. ठीक है, यहां तक समझ गए. स्टेज कैरेज हो गया कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज जब लेके जाता है, दैट इज नॉन एसी exempted, AC is taxable. Contract carriage, again non-AC is exempted. Travel, radio taxi, all of that is taxable. Metered cabs, जो काली टैक्सी होती है, right, that is exempted. Auto rickshaws are exempted. E-rickshaws are exempted. बट एक अमेंडमेंट आ गया कि नॉन एसी जो है यहाँ पे, दिस नॉन एसी विच वाज एग्जेम्प्टेड एंड यहाँ नॉन एसी विच वाज एग्जेम्प्टेड एंड दीज थिंग्स metered cabs and this will be taxable when not normally if you are using a Uber or Ola app. If you are using booking it through a e-commerce platform, then this and this will be taxable. Contract carriage,
Stage carriage, metered cab, auto rickshaws, that will also be taxable. Why? Because there the tax is collected by the e-commerce companies, so easily taxable. So when you are booking an auto directly and you're paying him, that will be exempted. But if you're booking the same auto through a mobile app, then that will become taxable. Rails, metro, monorail, tramway is all exempted because they need to give development for that. AC, also non-AC is exempted. AC and first class will be taxable. So एयर से ट्रैवल हो गया, रोड से ट्रैवल हो गया, रेल से ट्रैवल हो गया, अभी वाटर से ट्रैवल करते हैं. वाटर में क्या हुआ? यू विल ट्रैवल थ्रू अ वेसल इफ इट इज फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पे हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज, बैक वाटर्स में पीपल आर यूजिंग गोइंग टू द स्कूल्स थ्रू दिस waterways, then it will be exempted. Inland waterways, all of that will be exempted. But if it is for tourism or for public transport, then it will be exempted. Inland waterways, lekin vessels for tourism and transportation outside India will be taxable. Okay. Now, in terms of air, we have covered air, road, rail, water. We have covered in rail, in air. Apart from this, Batmans, they have also come up with a viability gap funding, जहाँ पे गवर्नमेंट विल डू द फंडिंग फॉर 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दैट एयरपोर्ट. जो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग है, सेइंग दैट ओके आप एयरपोर्ट बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे फॉर दैट एयरपोर्ट. व्हाट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी गैप फंडिंग. ओके, फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS, क्या कि वहां का कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए. सो द गवर्नमेंट इज गिविंग फंडिंग. That funding is also exempted up to 3 years from the commencement of the airport. So this is on passenger transport. Now we'll go to transportation of goods. ये जब रोड से होगा, couriers will be taxable. Okay, courier service जब हम करते हैं, that will be taxable. Individual trucks, carts, bullock carts are exempt. जब हम GTA सर्विस बात कर रहे थे, GTA सर्विस टैक्सेबल होगा, इधर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, जिसका पूरा डिक्लेरेशन हमने चार्ज में कवर कर दिया, रिवर्स चार्ज में. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हिच कैन हैपन थ्रू रोड. वन इज कोरियर, वन इज GTA एंड वन इज अदर्स. कोरियर इज टैक्सेबल. GTA वी नो, अगर GTA को पे करना वो पे करेगा, वरना रिसिपेंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज. अदर्स कुड बी इंडिविजुअल लॉरीज, जो एक लॉरी ओनर है वो GTA नहीं है, या फिर ट्रक्स है, या फिर कार्ड्स है, बुलक कार्ड्स, वो सब एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे. एंड देन GTA में भी एग्जेम्पशन मिलेगा, किसको? रैंडम गुड्स को मिलेगा. व्हाट इज रैंडम गुड्स? इन द रिलीफ मटेरियल्स और ट्रांसफरिंग, जहां पे फ्लड्स आ गए हैं, देयर यू हैव टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, रिलीफ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑल ऑफ दिस. उसका याद करने के लिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रैंडम. सो इफ दीज रैंडम गुड्स यू आर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब random goods not in its real sense, the nomenclature is random. If you are transporting these random goods, then it will be exempted. Okay. And then if GTA provides, पहले एक था कि अगर 1500 रुपए, 750 रुपए तक का वैल्यू है तब exempted है, वो भी हट गया है. तो even if you are transporting through a GTA for 500 rupees, उसके ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज आ सकता है if you are under those categories, वरना फॉरवर्ड चार्ज पे GTA पे करेगा. Okay. Then when a GTA provides to unregistered person, we have seen, right, if it is to a company or to one of those specified category, तब ही taxable होगा. Otherwise, if they are providing any service to an unregistered person, will always be exempted. Further, when they are providing to GE, GD, CG, SG, which means government entity, government department, central government, state government, union authority, union territory, local authority, government authority, for tedious purpose only they have registered, all of that will be exempted. So GTA providing to government basically will be exempted. Rail is taxable. अगर आप रेल से कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो तब टैक्सेबल है, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगा किसके लिए? सेम रैंडम गुड्स प्लस रेलवे इक्विपमेंट्स जो आप ट्रांसपोर्ट करते हो उसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगा. वाटर वाज ऑल एग्जेम्प्टेड. वाटर से आप जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो भी टैक्सेबल है. एयर से भी आप जो भी ट्रांसपोर्ट करते हो विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ऑल ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल. Okay, except this which is from outside India to India, there it will be exempted because there you are not the service
recipient. There the service recipient will be a foreign company who is shipping it. So ocean freight is exempted, but all others will be taxable. Okay, transportation is little heavy, but we have compiled it so that you understand it in a simpler manner. Let's proceed further. Passenger transport services, there's a question whether GST on buses used by corporate, is it exempted? They're clarifying that the exemption would apply to passenger transport services by non-air condition contract carriages where transport takes place over predetermined route on a predetermined schedule. So corporates भी अगर book करता है but route fixed है, then it will be exempted. But however, the exemption shall not be applicable where the contract carriage is hired for a period of time. तो आप रूट के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो बस यूज करते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए गवर्नमेंट, आप नॉर्मल बस रूट में यूज नहीं सकते हो बिकॉज दे आर हायरिंग इट ऑफ टू अ कॉर्पोरेट. तो अगर आप वो कॉर्पोरेट को भी सप्लाई करते हैं फिर भी एग्जेम्प्टेड होगा बिकॉज द रूट इज फिक्स्ड. लेकिन आप रूट फिक्स नहीं करते हो और बोलते हो कि आई कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, देन इट विल बी टैक्सेबल. क्लियर? जैसे हमने ऑलरेडी एक और एग्जेम्पशन में एक और क्लास में देखा था that if it is for renting purposes, then it is taxable. If it is for transportation of passengers for a fixed route, then it will be exempted. Then right of admission to events, जैसे आप एग्जीबिशन वगैरह जाते हो तो फिर टैक्सेबल रहेगा. हाँ टैक्सेबल रहेगा. लेकिन आप म्यूजियम में जाते हो, नेशनल पार्क में जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू में जाते हो, यहाँ पर इंकरेज किया जाता है लोगों को आने के लिए, तो इसीलिए दैट विल बी exempted. जहां पे म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू विल बी exempted. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में लोग कम आते हैं, लेकिन वहां पर अगर आते हैं तो उनको टैक्स नहीं लगना चाहिए. जहां पे आप जाओगे कुछ पुराने खंडर है, ताजमहल है, इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इट्स अ एंशिएंट साइट और आर्कियोलॉजिकल साइट. ओके, जहां पर आर्कियोलॉजिकल ने डिसाइड कर दिया, देयर इट विल बी exempted. एनी वैल्यू, नो लिमिट ऑफ द वैल्यू. Fully taxable, water park, theme park, exhibition, film city, amusement park, cinema hall, all of this is taxable. Then any place you go for circus, dance or theatrical performance, जहां पर थिएटर नहीं है, थिएटरिकल परफॉर्मेंस मतलब लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर अवार्ड फंक्शन में जाते हो आप, या फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हो, या फिर प्लानिटेरियम में जाते हो, वहां पर एग्जेम्पशन है इफ द कंसिडरेशन इज ₹500 पर पर्सन. अप टू 500 पर पर्सन विल बी एग्जेम्प्टेड. 600 रुपए ले लिए तो फिर ऑन फुल 600 इट विल बिकम टैक्सेबल. अंडरस्टूड? म्यूजियम, नेशनल पार्क फुल्ली एग्जेम्प्ट. सर्कस, डांस, अवार्ड फंक्शन, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटोरियम टैक्सेबल अप टू, एग्जेम्प्टेड अप टू 500 रुपीज. देन जैसे इवेंट का बात कर लिया तो फिर इसमें हम ये समझ लेंगे कि अगर एक आर्टिस्ट है, इफ द आर्टिस्ट इज डूइंग एनी परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, इट इज एग्जेम्प्ट इफ द कंसिडरेशन इज अप टू 1.5 lakhs. जो एक आर्टिस्ट है वो क्या करता है, म्यूजिक करता है, डांस करता है, थिएटर परफॉर्मेंस करता है, और वो इवेंट के लिए, वो परफॉर्मेंस के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है, तब एग्जेम्प्ट है. 1,60,000 चार्ज कर दिया, 10 लाख चार्ज कर दिया, होली इट विल बिकम टैक्सेबल. इन बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए आप 1 लाख करो फिर भी टैक्सेबल है. ब्रांड एम्बेसडर बन के करो, एनी वैल्यू इज टैक्सेबल. द लिमिट इज ओनली व्हेन यू आर डूइंग फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म फॉर म्यूजिक, डांस एंड थिएटर अदर देन बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है? Once, please repeat transportation of goods by water. So simple transportation of goods by water, what we are trying to say is transportation of goods by water was earlier exempted, now it becomes taxable. But one important thing is ocean freight, wherein
you are importing something, right? And the contract is the supplier will pay the transportation, because the price what you have agreed is cost inclusive of freight. उस केस में क्या होगा, द सर्विस प्रोवाइडर इज द फॉरेन ट्रांसपोर्टर एंड सर्विस रिसीवर इज द फॉरेन कंपनी. आपको तो गुड्स चाहिए, तो उस केसेस में यू विल नॉट पे जीएसटी. सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज ओशन फ्रेट. ओशन फ्रेट पे आपको जीएसटी पे नहीं करना है. यस आयुषी, व्हाट इज योर डाउट? सर माय डाउट इज दैट हमने वो किया ना कि जो फोक डांस और वो जो डांसर होते हैं और फोक म्यूजिक परफॉर्मर होते हैं, उन्हें, हाँ, उन्हें 1.5 लाख तक एग्जामिशन मिलेगा, 1.5 लाख तक एग्जामिशन. तो ये एग्जामिशन ईयरली है या फिर पर पेमेंट है? पर इवेंट के लिए, इट इज नॉट पर अच्छा. ईयर. और एक यस. इवेंट जाते हैं दिन, वो अगर एक महीने में 30 के 30 इवेंट कर लेते हैं, सभी इवेंट के लिए उन्हें 1 लाख ही चार्ज किया, सो दैट होल 30 lakhs विल बी एग्जेम्प्टेड, ओके. बिकॉज इट इज फॉर ईच क्लासिकल इवेंट व्हाट दे आर डूइंग. हाँ, थैंक यू. ओके, देन द नेक्स्ट एग्जेम्पशन इज ऑन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन. इसमें तो सिंपल है दैट, और काफी सारे क्लैरिफिकेशन भी आ गए हैं दैट रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए आप अप टू 7,500 जो भी कलेक्शन करते हो, देन इट इज एग्जेम्प्टेड, right? If it is more than 7,500, it will be taxable. Lekin, first you have to see the overall taxable limit for the annual turnover of the Residential Welfare Association. अगर Residential Welfare Association का limit ही 20 lakhs के नीचे है, because that's the limit for registration. अगर उसका लिमिट ही 20 lakhs के नीचे है, तो फिर वो more than 7,500 कलेक्ट करेगा, फिर भी उसका लिमिट less than 20 lakhs होगा. When can this happen practically is, अगर छोटा अपार्टमेंट है और वहां पे सपोज 10 फ्लैट्स एंड दे आर कलेक्टिंग से 10 फ्लैट से मंथली 8,000 रुपीज, मोर देन 7,500 हो गया, बट 8,000 इंटू 10 मेक्स इट 80,000. 80,000 इंटू 12 भी करोगे आप, फिर भी 20 lakhs तो टच नहीं कर पाओगे. So even there, if you collect more than 7,500, it is exempted, because the overall limit of 20 lakhs also has to be seen. ठीक है, सो बोथ द केसेस इट विल बी एग्जेम्प्टेड. लेकिन अगर मोर देन 20 lakhs है उसका एनुअल टर्नओवर, तो फिर लेस देन 7,500 इज एग्जेम्प्टेड, मोर देन 7,500 इज टैक्सेबल. और ये भी सेम है दैट इफ यू आर कलेक्टिंग 8,000, देयर वाज अ कंफ्यूजन वेदर यू शुड पे ऑन 500. नहीं, ऑन फुल 8,000 यू हैव टू पे इट. एंड द लिमिट ऑफ दिस 7,500, सपोज मेरे पास 2 फ्लैट्स है, तो फिर मैं दोनों मिला के 14,000 पे करता हूँ, विच इज मोर देन 7,500, तो फिर टैक्सेबल है नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी कंसिडर्ड पर फ्लैट, पर मंथ, पर ओनर. नॉट कि एक पर्सन के पास कितना है, पर फ्लैट पर मंथ कितना पे कर रहा है, दैट इज व्हाट इज बी कंसिडर्ड. लीगल सर्विसेज नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसीवेंट? If the individual lawyer is providing services to another individual lawyer, तो फिर exempted है. If the individual lawyer is providing to senior advocate, फिर exempted है. If individual is providing to a business entity whose receipts are below the specified limits, still exempted. If it is to a business entity whose gross receipts exceed, तो फिर recipient will pay under RCM. If they are providing to CG, SG or any other person, मतलब for his individual personal use जो कर रहा है, तो भी exempted है. Now, in these two things, it is very important. When a senior advocate provides to another individual advocate, तो फिर taxable रहेगा, because they say services provided by an advocate to a business entity whose turnover crosses, that is under RCM, and to any other person in his personal capacity is exempted. So senior advocate providing to individual advocate is taxable. Senior advocate to another senior advocate will also be taxable.
Again, same arbitral tribunal providing to an advocate or a senior advocate will be taxable. This chart will be very important. आप जब इसको RCM के साथ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा. Sir, if a singer is doing 5 concerts in a month, then amount charged by him is 50,000 for each concert. So, sir, limit of 150 is for individual concert or for all? Individual concert, madam. That's what somebody was questioning, right? So, it is for individual concert, not for per month or per day or per year. For each event, what you're charging, that is 1,50,000 and below, then it will be exempted. Sir, RWA registered and unregistered both also covered? Yeah, Residential Welfare Association, whether they are registered under the Societies Act or no, doesn't matter. How much is their limit under GST? If they are registered under GST, then it is taxable. If they are not registered, then it is not taxable. Another cases where they are not registered, but they are supposed to register, still it will be taxable. ऐसा नहीं है कि उनका टर्नओवर तो 20 लाख से लेकिन registered नहीं है. Liability will still come. Correct? Because it is on the limit, as we had discussed earlier, taxable person means a person who is registered or a person who is liable to be registered. If that RWA is liable to be registered, then it will be taxable. Banking services, all other services are theoretical, so not much to discuss on this. I'll share this presentation. You can read it. This is very self-explanatory. इसमें समझने लायक कुछ नहीं है. All of this is general exemption. Earlier, SEBI and IRDAI services were also exempted. Now that is gone. That is also getting taxed now. Now we'll have some questions which we'll discuss so that we can understand this. I am a trader dealing only with. Is it necessary to register under GST if my turnover exceeds 20 lakhs? Yes, Ayushi? Oh, no, sir, he's not at all liable to get registered under GST. Even if the limit crosses 20 lakhs? Yes, even if the limit is crossing 20 lakhs. Okay. Yes, Pooja? Yes, sir. Not liable for registration. सर लाइबल होगा क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई भी तो इंक्लूड होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग तो हमें करनी होगी. Okay. So there is one notification. वो notification बोलता है that if you are making only exempt supplies, तो फिर आपको registration लेने की जरूरत नहीं है. Okay, we will read this when we do registration, but it was linked to exemption. That's why मैं यहाँ पे discuss कर रहा हूँ that if you are dealing only with exempt supplies, तो फिर there is a notification, not in the law. Law के बाद notification भी आता है. Notification में कहा है कि if you're dealing only with exempt supply, तो फिर आपको registration की जरूरत नहीं है. Okay. Second question, amount charged for service provided by selectors. तो ये आपने पढ़ा है. Provided by selectors to a recognized sporting body. Is it taxable? Not taxable. Second one is saying taxable. Okay. Services provided to a recognized sports body only by an individual as a
प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, सिर्फ इन पांचों का सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा सेलेक्टर्स, ठीक है, टीम का डॉक्टर, ऑल ऑफ दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या फिर टीम मैनेजर, सिर्फ इन पांचों का सर्विस व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ recognized sporting body is exempted, everything else is taxable. So selector जो है, जो भी फीस लेगा सिलेक्शन के लिए, that will be taxable. Third question, is services exempted by way of vehicle parking to general public in a shopping mall? No. Okay. So everybody is saying that there is no exemption for this. It is taxable. Services provided by way of vehicle parking to general public are not exempted. Correct. So it is taxable. Fourth question. Ram is an agriculturist who stored sugarcane in a warehouse. He has taken fumigation services and for which he's paid a consideration of 6,000. Is it taxable or exempted? Sir, what is this fumigation services? We had discussed when we discussed agriculture services. Oh, okay, but it will be exempt. Okay. Pooja, what are you saying? Exempt, sir. Will be exempt. Okay, okay. So it clearly means that you are not paying attention in the class, because specifically we had discussed this in the agriculture services. All agriculture services, whatever you feel is taxable, specifically I had circled this. Fumigation in a warehouse was exempted, now it is taxable. That's why I had specifically highlighted and said that fumigation is not exempted, it is taxable. Fumigation means जहाँ पे warehouse में मच्छर या फिर any insects or toads shouldn't come. So they. Fifth question. Purva acts as a team manager, a recognized sport body for a tennis tournament organized by multinational company. Now, is this exempted or taxable? Fifth one, again, mixed confusions. Fifth one is services being provided by a team manager to a recognized sports body, but the sporting event is not organized by a recognized sports body. Okay. He is a team manager for recognized sport body, but the match is not organized. The thing is, the tennis tournament is organized by a multinational company. So it will be taxable. So thing is, services provided by a team manager to a recognized sport body and the
Sporting event should be organized. In this case, it is not organized by a recognized sports body, so it is taxable. Okay, there are MCQs. I will share the things. So that will help you to, I will give it with the answer so you can go through them. Any questions on exemptions? सर ये टीम मैनेजर मतलब रेम्युनरेशन ले रहा है सैलरी एक तरह से, तो वो Correct. तो एग्जेम्प्ट होगी ना सर, मतलब वो शेड्यूल 3 में आ जाती है। नहीं, रेम्यूनरेशन का मतलब ये नहीं है कि सैलरी। रेम्यूनरेशन इज वॉट एवर यू डू, और उसके लिए जो कंसिडरेशन मिलता है। सो राइट वर्ड इज कंसिडरेशन। तो कंसिडर, अगर सैलरी है तो फिर ही यू आर जस्ट सेइंग शेड्यूल 3 रहेगा, लेकिन टीम मैनेजर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, तो उसको कंसिडरेशन मिल रहा है 2 लाख रुपए का। वेदर एग्जेम्पशन में फिट होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके सर। और कुछ डाउट इन एनी ऑफ द एग्जेम्पशंस? Okay, so you go through the exemptions. If you find any difficulty, please prepare for it. Next class में हम clear कर देंगे उसको. Thank you for your patience. We'll see you in the next class. Thank you, Om Gupta. Yes, sir.